الله أكبر الله أكبر. Chers téléspectateurs, Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuhu. Aujourd'hui, nous sommes présents dans le programme nommé les problèmes jurisprudentiels ou les questions jurisprudentielles. Vous avez dû voir à la MTA qu'il a été annoncé que ce programme sera exceptionnellement dans le mois du Ramadan en live, c'est-à-dire que vous pourrez poser vos questions en live à n'importe quel moment. Avant ce programme, ou avant les questions posées par les personnes, je présenterai les érudits présents dans notre studio. Il faut savoir que ces érudits présents, ces savants, sont très connus par d'autres programmes aussi. Et par les bénédictions du Jalsa, par la grâce d'Allah, aujourd'hui, nous sommes chanceux d'avoir avec nous Mubashir Ahmed Kalon Saheb présent dans ce programme et avec lui il y a Maulana Zahir Khan Saheb. Lorsqu'on parle du Ramadan, il y a dans un hadith que Salman Farsi a dit que le saint prophète sallallahu alayhi wa sallam, le dernier jour de Shaban, il a fait un discours et il a dit: ô vous les gens, il y a maintenant un mois qui est venu qui est très béni, dans lequel si vous faites une bonne action, alors il est comme les autres jours cette action qui est normale et qui est faite dans ce mois-ci, et comme dans les autres jours où les actions sont obligatoires, sauf qu'il y a plus de bénédictions. Le cinquième calife, la personne, il y a un des califes, j'ai oublié lequel, mais a dit que lorsqu'une personne se protège des choses mauvaises, c'est-à-dire haram, qui sont interdites, dans ce mois-ci, même s'il ne le fait pas, comment peut-il être, comment ne peut pas-il être loin des choses interdites dans ce mois-ci? Dans ce mois-ci, et le saint prophète sallam a aussi ordonné au peuple musulman de prier beaucoup et aussi de lire le Coran aussi beaucoup, et aussi de se protéger des problèmes personnels et des mauvaises habitudes que vous avez. Le troisième calife dit que ce mois-ci était un mois très béni où il y a beaucoup de bénédictions et vos actions sont doublées de bénédictions. Qu'Allah nous donne la force d'accomplir l'ordre du saint prophète sallallahu alayhi wa sallam. Donc nous allons aller voir maintenant Mubashir Ahmed Kalon Saheb, et je vais vous demander à Mubashir Ahmed Kalon Saheb, est-ce qu'il peut dire l'importance du mois du Ramadan? Est-ce que vous pouvez dire aux téléspectateurs quelle est l'importance? Et donc nous irons aux questions après cette
question qui est très importante. बर्रे-ए-सगीर पाक व हिंद में En Inde, चंद साल पहले घरों au में subcontinent, धात के quelques बर्तनों années का avant, इस्तेमाल होता और एक खास मौसम में dans un, कली dans, करने वाले महलों की गलियों में फैल जाते थे और गलियों में ये मुनादी करते थे कि अपने अपने बर्तनों को कली करा लो। उनकी ये आवाज़ सुनकर घर वाले अपने धात के बर्तनों को जमा करते, उनके पास ले जाते और उनसे कली करवाते थे, जिसके नतीजे में वो धात के बर्तन उनकी अंदरूनी तौर पर खूब अच्छी तरह सफाई हो जाती और आइंदा 1 साल के लिए वो अच्छी तरह इस्तेमाल के काबिल हो जाते। बिल्कुल ऐसी ही कैफियत माह रमज़ान की है। Donc il a donné un exemple de la vaisselle. Par exemple, il y a une casserole au Pakistan, dans quelques années avant. Les personnes allaient dehors et pour laver ces choses-là, ils demandaient à des gens une spéciale chose et qui, après un certain temps, cette vaisselle ou cette casserole était lavée et propre. Il donne cet exemple comme le mois du Ramadan. Il dit qu'Allah Ta'ala a descendu, a ordonné aux musulmans le mois du Ramadan pour que chaque musulman puisse avoir cette casserole et puisse laver cette casserole ou laver leur spiritualité, laver leur personnalité et qu'ils puissent faire de bonnes actions selon leurs possibilités. Dans ce mois, vous allez où vous voulez, les actions, vous verrez que même toutes les personnes qui sont fainéants dans les prières, ils font la prière, ou ceux qui font avant la prière, qui avaient l'habitude de faire la prière, mais qui n'avaient pas de concentration dans la prière, ils se concentrent alors en faisant la prière en congrégation. Ceux qui font des prières, ceux qui ne faisaient pas de prières en plus que celles qui sont obligatoires, ils le font dans ce mois-ci. Les personnes qui ne donnaient pas de sadqa, alors ils donnent des sadqa, des sacrifices financiers dans ce mois-ci. Je voudrais maintenant présenter des hadiths que le saint prophète sallallahu alayhi wa sallam a dit à propos du Ramazan. Hazrat Abu Huraira dit que le saint prophète sallallahu alayhi wa sallam a lui-même dit: ô vous mes compagnons, le mois du Ramadan est arrivé auprès de vous. C'est un mois très béni. Allah a obligé de jeûner. Il dit que dans ce mois-ci, les portes du paradis s'ouvrent et les portes de l'enfer se renferment. Cela veut dire que la personne qui fera une bonne action, mais en cette bonne action, il aura l'intention d'avoir des bénédictions, alors pour cette personne-là, les portes du paradis s'ouvrent et les portes de l'enfer se renferment. La personne qui priera, qui fera des prières en plus, qui fera tahajjud, c'est-à-dire les prières du matin, et qui donnera qui fera des sacrifices, alors ces actions, les bénédictions de ces actions se doubleront de plus en plus.
Le saint prophète dit qu'il y a une nuit dans ce ramadan qui est la meilleure d'entre beaucoup de nuits. Il dit, le saint prophète dit que celui qui n'a pas eu affaire à cette nuit, il n'est pas chanceux. Hazrat Abu Huraira dit après aussi que le dernier jour du Shaban, le saint prophète sallallahu alayhi wa sallam a fait un discours et a dit: ô vous les gens, il y a un très grand mois qui est arrivé. C'est un mois très béni. Et il y a une nuit dans ce mois qui est mieux que beaucoup de nuits. Dieu a ordonné de jeûner dans ce mois-ci. La personne qui aura fait une bonne action pour se rapprocher d'Allah, alors ça sera comme s'il fera cette action, se portera alors comme s'il l'avait fait dans les jours normaux qui est hors du mois de Ramadan. Ceci est un mois de patience, il dit. Et il dit que la patience apporte au paradis. C'est un mois dans lequel il y a dans les que dans ce mois-là, les mu'min, c'est-à-dire les croyants, dans leur spiritualité, Allah Ta'ala, c'est-à-dire Dieu, grandit leur spiritualité. Donc il répète le hadith, c'est-à-dire que dans ce mois-ci, les portes du paradis s'ouvriront et les portes de l'enfer se renfermeront. Dans les portes, ça veut dire qu'en fait, que les mauvaises actions एक मुसलमान की जिंदगी बसर करने के नतीजे में और नेकियों में परवान चढ़ने के नतीजे में जब उसकी बदियां घटती जाएंगी तो दोज़ख के दरवाजे उसके लिए बंद होते चले जाएंगे. C'est-à-dire que ces portes veulent dire que lorsqu'une personne qui faisait des mauvaises actions, quand il fera des bonnes actions, alors ces mauvaises actions s'enterreront tout seuls et les bonnes actions reviendront. Cela veut dire alors que les portes de l'enfer se refermeront petit à petit par rapport aux actions, à ces mauvaises actions qui se renfermeront, qui s'enterreront eux-mêmes. Dieu dit, le saint prophète sallallahu alayhi wa sallam dit que Dieu, dans ce mois-ci, il libère beaucoup de personnes qui avaient l'habitude de faire de mauvaises choses dans ce mois-ci. Le saint prophète dit que la personne qui a vu le Ramadan venir dans sa vie, dans le mois du Ramadan, il l'a vu venir, mais il n'a pas pris bénéfice de cela. Il est très malchanceux, il n'a pas de chance. Merci beaucoup, Bachar Ahmed Khalon Saheb. Après avoir présenté l'importance du mois du Ramadan, nous allons aller voir maintenant les téléspectateurs qui appellent en live. Donc, il y a beaucoup de téléspectateurs qui appellent en live tout de suite. Donc, comme nous avons dit au début, ce programme est en live et vous pouvez poser vos questions à n'importe quel moment. Donc, le numéro est 02 08 68 78
और अगर आप 01 यूके से बाहर 8. से फ़ोन कर रहे हैं तो 0044 के बाद 208 से आप शुरू करेंगे। Et si vous appelez de dehors, donc vous हमारे साथ appelez कॉलर्स par le code ऑनलाइन हैं 0033 ou तो उनकी तरफ 0044 हम après चलेंगे। 7. सादिया साहबा Donc हैं nous allons voir यूके से maintenant Sadia और Saheb qui est नाज़रीन से d'Angleterre. मैं ये गुजारिश Donc करूंगा je कि जब demanderai aux आपकी लाइन शुरू téléspectateurs हो que तो उससे पहले lorsque, अपने टीवी की आवाज़ कम lorsque कर दें vous êtes ताकि appelé यहाँ pour poser स्टूडियो une में मेरी question, आवाज़ को सुनने में essayez मुझे de réduire le volume ou सादिया साहबा réduisez से le यूके से volume बात de la करेंगे। télé pour qu'il n'y ait pas de dérangement. Donc Sadia Saheb de l'Angleterre. जी मुझे कंट्रोल रूम ने अभी बताया कि महमूद साहब हैं नॉर्वे से। Donc सादिया साहब elle n'a ऐलान pas पर répondu. वेट कर रही हैं तो महमूद साहब Nous से हम parlerons à नॉर्वे से बात Mahmoud करेंगे। Saheb जी महमूद de साहब। Norvège. जी अस्सलाम वालेकुम जी रहमतुल्लाह। salam alaikum. और रहमतुल्लाह। Oui, salam alaikum. Wa alaikum जी assalam. मेरा ये पहले एक सवाल ये है Ma कि première question est que रोजे में परफ्यूम लगाना अपना उसकी इजाजत है pendant जायज़ le है या नहीं? ramadan, est-ce on peut mettre ठीक du है महमूद parfum ou साहब pas? बहुत शुक्रिया। Donc merci इस beaucoup सवाल के Mahmoud साथ हम Saheb. चलेंगे मुकर्रम मोहतरम ज़हीर अहमद खान Donc साहब nous के allons साथ। voir Zahir तो Khan आप Ahmed सुनिए Saheb. पूछते हैं कि रोजे के दौरान La परफ्यूम या question खुशबू posée लगाना est que जायज़ है? est-ce que pendant le ramadan nous pouvons mettre du parfum? Zahir Khan Saheb dit oui, c'est permis, mais mettre du parfum, ceci est la manière du Saint-Prophète sallallahu alayhi wa sallam. Le Saint-Prophète sallallahu alayhi wa sallam mettait du parfum. Lorsqu'on fait le ramadan, lorsqu'on jeûne, le parfum n'a aucune chose, n'a aucune à voir, parce que le ramadan, jeûner veut dire aussi qu'une personne ne peut pas manger, aucune chose ne peut aller dans son corps. Donc le parfum n'a aucun agissement à l'intérieur du corps. बताना चाहता हूँ कि रमज़ान की बरक़ात में से ये भी है कि आज हमारे इस प्रोग्राम का लाइव जो है वो तर्जुमा भी नशर हो रहा है। Donc je voudrais dire à chaque téléspectateur aussi qu'aujourd'hui, dans ce programme-là, il y a aussi la traduction en anglais et en français. Donc on est en train de le dire en anglais maintenant. So you can switch to those channels or those tunes or you can set your TV on that frequencies. जी अगली कॉल जो है वो Donc, हम अपने स्टूडियो से वसूल करेंगे। La मैं prochaine स्टूडियो से question, पूछूंगा कि je सादिया demanderai au साहबा studio यूके से जो है उनको de nous कंट्रोल faire, रूम आगे जो है उनकी de कॉल nous mettre en फॉरवर्ड liaison कर दें। avec जी सादिया साहबा। Sadia Saheba. अस्सलाम वालेकुम। Assalamu alaikum. Wa alaikum assalam. जी मेरा सवाल था कि Donc ma question जैसे est que दूसरे शहर में या दूसरे टाउन में आपके हमारे जैसे रिश्तेदार हैं और वो हमें अगर अफ्तारी पे बुलाते हैं और जैसे 40-50 donc si मील का फासला तय il y a करते des हैं, familles वहाँ qui से nous appellent क्या pour क्या करना ouvrir le चाहिए? jeûne जी ठीक है बहुत loin, शुक्रिया qu'ils आपका habitent, सवाल हमें des मौसूल personnes हो qui गया habitent है très loin. सफ़र के हवाले से। Est-ce que nous और pouvons ये voir, जो est-ce que है pouvons-nous तस्वीर अक्सर partir रमज़ान के दिनों में pour ज़रूरत ces पड़ती invitations? रहती Est-ce है। que बहुत pouvons से nous सवालात ouvrir le इसमें jeûne मुतल्लिक़ avec ces आते हैं। personnes? तो Donc Wassim मुख्तलिफ़ Sabdib qu'il y a beaucoup de questions posées par rapport à ce sujet, donc nous allons demander à Mbachir Ahmed Kahlan Saheb. Oui. शरीयत का हुक्म ये है Donc la loi islamique ordonne जब que इंसान lorsqu'une बीमार हो personne जाए soit malade या सफ़र पे चला ou जाए soit फिर un voyageur रोज़ा en train de खत्म हो voyager, जाता है। donc ce jeûne-là est बीमारी fini. में या सफ़र में खुदा के हुक्म की नाफरमानी करके अगर रोज़ा रखेंगे Donc si maintenant nous sommes malades et nous sommes en train de voyager et que nous jeûnons, ceci est contre l'ordre d'Allah. Donc तो रोज़ा रखने में सवाब si nous le faisons, ça sera alors Dieu ne sera pas content de nous. तो रोज़ा ना रखने में Si सवाब Dieu dit faites le ramadan, alors nous le faisons et dans cela il y aura de la bénédiction. Mais si nous ne le faisons pas, si nous le faisons et qu'il dit de ne pas le faire, alors il n'y a aucune bénédiction. Si une personne habite très loin, normalement, et vous appelle pour ouvrir le ramadan, je pense pas que ce ne soit, je pense pas qu'il faut y aller. मगरिब तक जो वक्त है वो दुआओं की कबूलियत का वक्त है। Donc de Asr jusqu'à Maghrib et Isha, ceci est le temps
मसरूफ होने का वक्त है des doigts, c'est-à-dire des prières. सेंटर्स में कुरान पाक का दर्स सुनने का वक्त है Ceci est aussi le temps d'écouter des dars dans les mosquées. सफर में गुजार देते हैं और कुछ Et si par ce temps-là, nous allons voyager pour aller voir quelqu'un et pour aller parler avec ces gens-là et puis ouvrir le jeûne avec eux et s'amuser, alors vous aurez usé tous ces bénédictions qui étaient de écouter des leçons coraniques dans les mosquées ou de faire des prières. Donc au lieu d'avoir ces bénédictions-là, nous usons ces bénédictions pour aller voir des personnes. Donc ce n'est pas bon. Donc merci beaucoup. Nous allons parler aux téléspectateurs suivants. Donc nous essaierons que les personnes qui appellent, qui attendent par ce programme et au total est d'une demi-heure. C'est pour ça que nous essaierons de prendre chaque téléspectateur. Donc nous allons parler à Amtoul Saeb d'Angleterre. Assalamu alaikum. Dis wa alaikum assalam. Posez votre question. Donc je voudrais demander. जी ठीक है सवाल आपका पहुंच गया है कल से वाजे जो है उनकी बात है कि रोज़े के दौरान इनहेलर इस्तेमाल किया जा सकता है जी इनहेलर इस्तेमाल कौन करेगा जो बीमार है जिसको इतनी तकलीफ है कि अगर वो इनहेलर इस्तेमाल ना करे तो उसके सांस उखड़ने की तकलीफ उसको लाहिक होगी तो जिस इंसान को इस किस्म की बीमारी लाहिक है उस पर तो रोज़ा फ़र्ज नहीं है. Donc la question posée est que est-ce qu'une personne peut utiliser des produits d'asthme? Alors il dit que les problèmes d'asthme, ça veut dire alors que cette personne est malade, donc c'est mieux que cette personne ne fasse pas le ramadan. Donc la prochaine question est Munibullah Saheb. अस्सलाम वालेकुम. वालेकुम सलाम. जी मैं अब्दुल्ला खान बोल रहा हूँ मॉन्ट्रियल कनाडा से. जी जी. Donc je parle du Canada. Ma question. पढ़ते हैं तो उसके बाद अगर आप वितर पढ़ लें तो फिर भी आप सुबह तहज्जुद पढ़ सकते हैं या आपको वितर. Donc ma question est que lorsque nous faisons les tarawih, c'est-à-dire les prières du Ramadan après Maghrib et Isha, et que nous faisons les 8 heures après, est-ce que nous pouvons faire le tahajjud, c'est-à-dire la prière du matin qui est avant le Fajr ou pas? Donc Zayd Khansab dit que le saint prophète sallallahu alayhi wa sallam a dit à propos des deux manières, a ordonné les deux manières. C'est-à-dire qu'une personne qui fait les tarawih, si une personne fait Isha et qui fait les 8 heures après, il ne fait pas les tarawih, il peut faire le tahajjud, c'est-à-dire le matin, il peut faire les tahajjud. Mais si une personne qui fait les tarawih et qui ne fait pas les tarawih et il ne fait pas les 8 heures, s'il veut le faire les nawafil ou le matin, il peut le faire, il n'y a aucun problème. Il peut faire les tarawih après le tahajjud. ऐसी सूरत में उसके वितर उसने रात को अदा कर लिए हैं, उन्हें दोबारा अदा करने की ज़रूरत नहीं है, और अगर उसने नहीं पढ़े तो सुबह वो तहज्जुद के लिए नवाफिल. S'il n'a pas fait les tarawih, il peut le faire aussi les tahajjud, et s'il n'a pas fait le tahajjud, il peut aussi faire les tarawih le soir. Donc maintenant nous allons avancer avec Shafiq Saheb. Assalamu alaikum wa rahmatullah. Donc ma question, donc je voudrais passer le salam aux érudits présents. Et ma question est que est-ce que pendant le Ramadan nous pouvons avoir une vaccination, une injection? Le Ramadan veut dire que une chose à manger ne doit pas rentrer dans le corps, ou un médicament ne doit pas rentrer dans le corps. Si nous faisons une injection, une vaccination qui rentre dans le corps, alors ce médicament va dans le corps.
या इफ्तारी के बाद Si nous ne sommes pas malades, vous pouvez le faire avant de faire le jeûne ou avant de le couper ou après de le couper. Mais pendant le ramadan, vous ne pouvez pas, c'est interdit. जी ठीक है, बहुत शुक्रिया। अभी भी Donc, हमारे merci पास beaucoup. Il y a फर्ज beaucoup लिस्ट है। आगे चलेंगे, de मैं spectateurs चाहता qui हूँ कि जितने appellent. भी सवालात Nous हैं, avancerons. तो जितने जो सवालात हैं Donc, उनको हम ले लें। je voudrais तो हमारे avancer साथ avec chaque तारिक साहब, téléspectateur. Donc, il y a Monsieur Tariq Sahib. कंट्रोल रूम से कहूँगा तारिक साहब की लाइन जो है जी, तारिक साहब ने बताया कि वेट करके वो चले गए हैं। Donc, अगर सुहेल Tariq साहब Sahib est शुरू में हमारे parti. साथ आए थे Donc, il y ऑनलाइन, a हम Soheb देख Sahib, रहे सुहेल साहब हैं। Sohel Sahib. सुहेल साहब यूके से। जी, हमारे साथ उन्होंने बताया कि स्टूडियो में जो लाइन पर नसीमुल्लाह साहब जर्मनी से हैं, वो बात Donc, il y करना a चाहते हैं। Nassimullah Saheb नसीमुल्लाह de l'Allemagne. अस्सलाम वालेकुम। मेरा ख्याल है कि लाइंस में कुछ थोड़ी सी Donc, je pense qu'il y a un problème प्रॉब्लम। हम technique. बात करते हैं। Donc, nous allons सवाल मैं parler. खान साहब आपसे पूछना चाहता हूँ कि रोज़ा Je vous रखने के demanderai à मतलब Zahir कि Khan रोज़ा Saab रखना que सब पर फर्ज है या कोई est-ce que le ramadan, jeûner, असल est में बात यह है obligatoire कि sur अल्लाह chaque ताला personne कुरान ou pas? करीम में फरमाता है La chose est que कि Allah dit dans le या Coran, अय्युहल्लज़ीना Ya आमनू ayyuhallazina कुतिबा amanu अलैकुमुस kutiba सियाम alaykumus कमा siyamu कुतिबा kama अलल्लज़ीना kutiba मिन alal lazina min क़ब्लिकुम qablikum la'allakum कि tattaqun. तमाम मोमिनों को तमाम Que tous les उम्मत croyants, मुसलमान को ou इसमें tous les मुखातिब किया musulmans, गया है। लेकिन Allah साथ dit à ही tous ces आगे musulmans, जाके ये फरमाया कि मन काना मिनकुम मरीजन et औ man अला kana सफरिन फ़इद्दतुम minhum marizan, तो इसकी c'est-à-dire que हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि le वसल्लम saint ने prophète इसकी sallallahu alayhi wa रोशनी sallam में ये बताया a जो dit à propos फुकहा ने de जो उसूल ce, निकाला वो ये de कि हर ce verset आकिल बालिग मर्द और औरत que chaque जो personne अगर qui सेहतमंद grandit है, et qui est मुकीम है, यानी mature, सफर पे नहीं है, बीमार नहीं है, तो उसके लिए ये हुक्म है। alors il doit और faire, ce अगर qui, वो qui ne मरीज voyage pas है et या qui n'est pas मुसाफिर malade, है तो उसके लिए il जैसा doit कि le कुरान faire. करीम ने Mais फरमाया si une फरमाया personne voyage ou qu'il est दूसरे दिनों malade, में alors रोजा रखेगा। Allah Ta'ala ऐसे dit dans le लोगों के Coran qu'il लिए doit le तो faire ये dans है d'autres कि jours, वो c'est-à-dire फिदिया après les उसके लिए jours qu'il a ये arrêtés. कुरान करीम ने ये भी फरमाया कि ऐसे लोग जो रमज़ान के महीने में Allah रोज़ों aussi से dit महरूम que रह s'il y a जाते des हैं personnes qui ne peuvent सफ़र pas की faire वजह le से या ramadan à बीमारी cause की de वजह से voyager तो ou à उनको उस cause कफ़ारे के d'être तौर malade, पे फिदिया alors भी वो अदा कर दें और en जब en la सेहतमंद हों rédemption या de, सफ़र से de ce वापस आएं तो फिर ramadan, अपने en रोज़ों revenant की de इनकी leur पूरी कर लें। voyage ou après le लेकिन ramadan, जहाँ il तक faut qu'ils refassent le छोटा ramadan सवाल है तो इसके ou payer le मुताबिक क्योंकि fidya. वो उनकी उम्र ऐसी होती है उसमें नशोनुमा हो Il रही y a des होती है petits, और pour les gens इस्लाम qui के sont तमाम petits, qui a अहकाम जो हैं वो les jeunes, इबादत से ताल्लुक़ रखते हों si cette दूसरे personne est मामलात से très jeune, ताल्लुक़ il n'est रखते pas हों obligé de le faire. उनमें हमेशा इस्लाम ने उम्रों को Dans उम्र l'islam, को एज को मद्देनजर रखा है l'islam a और toujours parlé मुतल्लिफ des करार âges. ही उसको दिया जो आकिल और बालिग हो जाए रमज़ान के लिए L'islam a रोजे toujours के dit लिए qu'une personne इसलिए a des ऐसे लोगों के लिए responsabilités जो आकिल j- बालिग हैं au वो temps मर्द où il हैं या arrive औरतें हैं à उन पे un रोजा âge फर्ज है और जो रुखसत है वो où il मुसाफिरों est, और où il devient mature. जी ठीक है खान साहब, बहुत शुक्रिया। नाज़रीन किराम, इसके Donc साथ merci beaucoup. हम अपने प्रोग्राम Chers के इख्तिताम पर téléspectateurs, पहुंच रहे हैं। वक्त खत्म हो चुका है। le temps est fini pour ce programme. Donc maintenant, Inch'Allah, le prochain mercredi aussi, ce programme sera présenté en live devant vous. आगे बढ़ेंगे Donc, जो मौजू से ज़्यादा मुनासबत रखता होगा हम आपसे उससे मुतल्लिक़ सवालात nous parlerons, le sujet sera le même, c'est-à-dire à propos du Ramadan, par rapport au Fidya, au Fitrana ou à propos du Eid aussi. Nous parlerons du Eid. Donc, Inch'Allah, nous serons présents dans le prochain programme au mercredi. Et je voudrais remercier nos érudits qui sont présents. Merci beaucoup d'être présents aujourd'hui ici. Et il y a aussi beaucoup de spectateurs aussi qui voudraient appeler comme Demshid, Akhtar Sahib. Mais nous ne pouvons pas, nous excusons pour cela parce que le temps se termine. Inch'Allah,
prochaine fois, vous aurez l'occasion de poser votre question. Inch'Allah, nous prendrons. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh.